खत्म कर दें। सबसे मैं सूची के अनुसार ही लोगों को बुला रही हूँ। सबसे पहले आशीष गिरी साहब जो बंगाली में अपनी बंगला में अपनी कविता वो नहीं है। चलिए एक तो कम हुए। अब ये जो दूसरे नंबर पे हैं आरोही बेलारी, आरती बेलारी, ये अंग्रेजी में कविता पाठ। A very good morning. I had a nice adventure computer. हम लोग मथुरा पहुंचने ही वाले थे, सर थे हमारे साथ। मथुरा पहुंचते पहुंचते मेट्रो लेके यहाँ पे रन करके आ गए। So we made it on time, thankfully. So maybe next 10 minutes, I write poetry in English, and the poetic journey has started about 5, 6 years ago. I'm a physician. I used to write only medical blogs, but now I moved away from that, and I mean, I still practicing physician, and poetry comes purely out of passion when I feel it. So over the next 10 minutes, as Madam allowed, I would like to take you, I've curated some poems. So I will take you on a journey from faraway Himalayas to within ourselves. So the next 3 to 4 poems will be our journey into from Himalayas to here. So the first poem is called Faraway House in Himalayas. Why Himalayas first? Because I totally love them. I go yearly on trekking. The inspiration to write poetry started when I looked at those majestic mountains. So here goes about a faraway house in Himalayas. Houses built to last, weathers every epoch. Memories of winter are tough to erase. Long winters are the norm. Yarn too have gone warm. Warm woolens do thaw the soul. You remember the fireplaces? Fireplace once had witnessed tales of wild women who laughed around the fire. Windows closed now were once open, welcoming the spring blooms under the aegis of Himalayas. How does one feel? Perhaps a vicarious thrill. You need to live a lifetime to become one with the mountains. Breathe the fresh winds, smell the fragrance of forest, hear the call of birds, dance like wildflowers, drink those glacial cold waters, sing the song of silent mountains. I go on a yearly pilgrimage, for I can't live the old habits of a chaotic city lives. That day in a year I go, I witness the recklessness of mountain weather, like a young man who refuses to grow. Wild, windy a moment, sunny and breezy the next, showering with snow love and playfully throwing a hailstorm. All this in a day. Can I be this reckless and at peace like mountains? Futile goodbyes I bid to mountains, but it's a best friend who never disappoints, leaves me with sublime. Back to chaotic city lights, I gingerly walk to find a familiar comfort, but mountains have gone into tiny crevices. I think of faraway houses built to last forever. I didn't recall what did I see in front of the house? Tiny sprouts at the entrance. That was the faraway house of Himalayas. Now that now that we came from Himalayas, I'm back to the city. So this is a poem about city stories. So I just witnessed the craziness of our Delhi metro just now, taking. So it came in an experience, handy experience. So this is about the city stories. I drove through the city much late in the night, 0 hour to be precise. Gentle rhythm continuing after the initial pounding. At the steering, alone and quiet, breathing too was hushed. Radio in the car felt afar, obscure language I recognized but melodious. Watching city at dark hour looked at ease and gentle. Feels different city within city. People not so in hurry, glowing lights like fireflies.
blinking, hopping at skies. It has its own cadence. Like for those nocturnals I sighed, city never sleeps. A trunk wobbles screech as I brake the car. That's the night. Another time, I drove early in the morning, earlier, much earlier than sunrise, where an honest dawn was waiting to stretch. City that sleeps, I thought. Invisible people are visible. Street sweeper at the horizon brooms. There's a flower vendor on the cycle with his blooms. The vegetable vendor just setting up his harvest. A lone walker with his crisp stride and footpaths while lying around. Here I spot a guy with a heavy backpack. He bends forward, asks for lift. Now I'm curious. I wait to see, as if the entire universe slowed down and paused to fulfill his wish. A red bus stops and lets him in. Would this happen in busy daylight? Feels different city within city, city at daybreak. In the stillness of chaos, cities have elements, cities have liberty. They belong to none, yet to everyone. Cities pause and rest, perhaps never shuts to those in need. I wish to loiter around these cities and fall in love with its ambiguities. I drive away with my silly thoughts, child sleeping on my car lap. Day breaks and so do I. Halt and home arrives. So we see city light at different times. So just try to bring that. So as the journey goes on, this is a very personal journey. The next poem is called Stranger. So what if you had known me long ago? Now I'm scarred with wounds of trauma, shatters of abuse and drama, floundering guilt and shame, walked through the hell, lost in whirlwind of emotions. What if you have known me long ago, when I laughed silly and loud, smelled the fallen flowers, painted a house next to God? Why not? Spoke of dreams like real, cantering away joyously in the moment mojo. What if you had known me long ago? I recall the bruised wounds, nursing them carefully with love and nurture, poetry and coffee. People called me brave and strong. They said, curve of your smile is the grace, they said. But who was I before I knew the battlefield? Before I knew I was walking on mines? Before the wounds were inflicted? Before the words became poetry? Before I realized to live is to survive the waves of this world. What if you had known me long ago when there were no wounds or there were wrong wounds, when there were scars, some healed and some not, when there was no poetry, when there were no words or no rhyme, when there were no tears, just the tranquil silence? Would you love me then or would you love me now? Am I a stranger now or then? So I think with each poem change. So are we a stranger now or back then? So next is a poem called Letter. This is based on a lot of patients who become like, they develop Alzheimer's, they develop neurological diseases, they forget themselves. So based on this, I've written letter. So this is the letter a caregiver is writing to their loved ones. I wrote a letter like the olden days. No instant messages, no blue ticks. I wrote because you were away. Reasons known yet fateful. Did you read my last letter? Not last, first one actually. Did your hands tremble touching it? I trembled, it trembled with tears as I wrote. Were my words a piercing sword? If words had weight, they were dense like earth, burdened yet carrying with might. Sweet talk, you must have smirked. Life wasn't always a prison, neither an escape mission. It was a sanctuary of love. Skewed, distorted, even unfair. Waves of the ocean do rise and fall. It's a turbulence or darkness you can't escape. I wrote of our 7 hour intimacy, 7 hours intertwined intimacy, 7 hours
dreams laid out like fluffy clouds, clouds of love and unity spoken. Didn't we make a vow that way, that day, to be forever together till eternity ends? I wrote of scorns and disdains, yet there was an air of laughter. It was an invisible shield of a tiny little beehive. Beehive, do you know of beehive? Beehives, they say, have boundaries which keep them safe. I too guard with our boundaries, not knowing boundaries can be breached from inside. I wrote of increasing strangeness, loathed the indifference, not knowing you felt the same of an familiar world becoming unfamiliar. I wrote of my journey into your beautiful mind till the neurons zigzag rapidly into their own journey. What remains of me is these letters I write with a hope the words reach real you. That last one. Yeah. So the last one I would leave you with is the last one. Okay. So the journey had to complete here. Thank you so much. Poem is B. Roy Mridula. Roy. थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसा मंडे मॉर्निंग बहुत दुश्वार होता है, नहीं? और दिल्ली तो अपने एकदम खिला हुआ सा है, so many flowers. Thank you everybody, my lovely colleagues for being here and friends who have turned up, like lovers of poetry. And साहित्य अकेडमी राव साहब आप सुन रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। So I promise to read 5 words and I won't trip my time. So Festival of Letters. Okay, so I will read this poem which is almost like a letter to a lover. और डेट पे गौर करिएगा. This was the day the lockdown began. It is set in Darjeeling. The poem is called Darjeeling, March 24th, 2020. That chair by the fireplace, now where's your jacket? The breeze has stopped teasing about your musk fading from its collar as your voice lingers on the label. Your lost temper is lying by the tweed shoulder with an edge as I lean against it to hear what you chose to keep unsaid when you left. Contours of our walks in the snow by the Glenaries have bloomed into daisies like songs touched by that is all I share now. Few words are still looking for meaning. They will be shared in person. Until then, waiting. And I'm part of this wonderful anthology, which is by the Sahitya Academy. It says Modern English by Young Indians. This poem is called Dhanushkodi. थोड़ा मैं context देना चाहूंगी. Dhanushkodi is an abandoned town at the southeastern tip of Tamil Nadu. It is 29 kilometers west of Talaimanar in Sri Lanka. This town was destroyed by the cyclone, Rameshwaram cyclone in 1964 and remains uninhabited. It was beaten up an entire train. So this was such a heavy lot. And there are not a single survivor who's made it. तो ये एक इमेजिनरी सर्वाइवर पे है जिसका नाम जूली है और एक साहब जो लिख रहे हैं उनको श्रीलंकन वाटर्स ने वॉश ऑफ करके उस देश में ले गए धनुषकोडी 9.1794 79.418 degrees east. Storms are hungry, greedy for more with an eye for depression. Needy storms leave footprints of a ghost town. Dear Julie went down too, or maybe she was late, maybe alive, maybe she was who she was. He swam to the border before Christmas. Every winter, one journey since 1964.
He liked his brandy when handcuffs came loose. Sentinels looked the other way as they chose this fool over other fools who prayed in peace. They found a boat with his hat, his shoes baggy with memories, compass rusty with precision, tired of decision. The needle had stopped dancing to the tune of north. Wait. They found him caught in a net, stoned. He held a thought and a pearl. His gibberish spoke of a mermaid who fed his girl to that storm that Christmas. His girl was now a pearl, beyond bullets, visas, beyond borders, beyond time. There was nothing like late in her world. One late he hates when they call her late Miss Julie Fisher. She could never be late, not even for that train which came a day before Christmas. Thank you. Thank you. This is my own book, Apostrophe. And while on borders, I think resume पढ़ते वक्त, bio देते वक्त मेरा border के साथ जो रिश्ता है, वो mention हुआ था. ये मैं पढ़ूंगी. It's called Misunderstanding. It's a short poem. Abbreviated silence in that noise between the unheard and the unknown. The unspoken hovers on the edge of sanction and taboo. The undefined is a silent lover. Inebriated silence distilled, full bodied intimacy of the spirit brooms the silence of thought bubbles. Glazed eyes begin to draw a line between misunderstood silences and silenced misunderstanding. काफी गंभीर है. This I will take up from Aarti's poem here. This is dedicated to my mother-in-law. She had Alzheimer's in her sunset years. This is our conversation. Flowers that you wore. She'd sat next to me, a few light years away, close to a certain Alzheimer. Spoke of pines in Kumau and a certain breathlessness. Intense. She pecked on memories which fed her through this unwritten diary from her own history. She walks up to the mirror. She walks back to me. She walks back to the bed. She walks back to me. She walks towards strains of music of Tagore by the green flags of the window, cups her hands to hold August in her palm. There was not a moment she lost only time that she didn't care for, maybe. She chuckled, called me to come close. I walked unsure. She looked at me, my forehead, my hair, now a shade of slate, where grays sketched graffiti. She teased a bit of my strands of that gray, patted some raindrops on my hair, and then with a whisper, she banished those light years away. Don't hide them. They are tendrils of the flower that you wore yesterday. Thank you. One more. I will leave you all with a hopeful poem. It's called The Yellow Paper Plane. That yellow paper plane flew away, but not high enough to bring my song, but it found the moon, a half moon, which hopes to be complete again, not with the fullness of reflected glory, but to begin a story for another side, that side to him which poets ignore. That paper plane, once a blank page, has now holes for it to fly. The moon felt lighter as a writer. It wrote with tremor on the unfurling paper, and the paper plane began losing height, losing height, gaining depth. The moon paused to hold a thought beyond the night and wept
as the paper plane was swept by this breeze of change, and then the paper plane rose again, withstood undoing, and spoke aloud. Someone must choose to end, to begin a new story, and this time it's your dark side. The paper plane has come home, only this time it's not yellow, it is red. Thank you. I get a rose. Dear memory, Mr. Anil Misra, change of language. कार्यक्रम की अध्यक्ष आदरणीय मृदुला जी, मंचस्थ कवि और सभा ठीक है, सभागार में उपस्थित साहित्य पे मैं अपनी कुछ कविताएं पढ़ता हूँ। पहली कविता है नहीं पन जात तरो। अपने कमरे में सोने के लिए लेटा हुआ स्मृतियों की नदी पर एक पुल बनाने की कोशिश। कुछ बातें इधर छूट गई हैं, कुछ उधर। रात के विशाल गर्त में झंझा भर रहा है, टूट टूट कर नीचे गिरते हैं। आकाश में काले बादल हैं, रुक रुक कर गरजते हुए। काला बाघ उग्र हो चला है दूसरे के अपने इलाके में प्रवेश किए। सोचता हूँ इतने दर्द उठाए कंधे पर रात कैसे चलती है। ग्रह और नक्षत्रों को क्या सचमुच लगता है ये सब पूरा तमाशा है, और वह कुंडली के 12 घरों में और आकर चौकड़ी भरते रहें। मेरे मन में अक्सर सुलगती है एक तस्वीर। मेरे मन में अक्सर सुलगती है एक तस्वीर। चरित्र के सवाल पर भीड़ से सरेआम पिटती स्त्री। देखते हुए मेरा चुपचाप आगे बढ़ जाना कि ये तो दुनिया है। मेरी नींद के ऐन दरवाजे पर खड़ी ऐसे सवाल कर रही है जिसके उत्तर मेरे पास नहीं है। शहर के संभ्रांत इलाके में मेरा मकान है। बीच बीच के कुछ खाली प्लाटों पर अपने परिवारों के साथ झुग्गियां बनाकर रहते हैं मजदूर। रात इस वक्त लड़खड़ाती धुन में कोई गा रहा है। रात इस वक्त लड़खड़ाती धुन में कोई गा रहा है। अब की देर पार उतारो नहीं बन जात तब। किसी झोपड़ी से अकस्मात शोर उठ रहा है। शायद भीतर घुस गया है नाले का पानी। ओह, जिंदगी अपना कैसा नक्शा। एसी चलाकर कितने लोग मेरे कमरे में जंगल की झाड़ियां उगाई हैं जिसमें छिपा हुआ एक परभक्षी ताक रहा है मेरे बिस्तर की ओर। बचपन के कुछ पुराने खिलौने हैं, बहुत मासूम घबराए हुए। परेशान हूं कि कैसे बचाऊं उसकी जान खून के प्यासे जबड़ों। सोचता हूँ इस निर्दयी दुनिया को खरगोश के बच्चे की तरह कोमल होना चाहिए। तजुर्बा कहता है कि ऐसे सपने सबसे नाजुक शिकार हैं, दूर ऊंची पेड़ की डाल सी देखती चीजों के लिए। नींद आंखों के बाहर खड़ी तनिक झांकती है। नींद आंखों के बाहर खड़ी तनिक झांकती है अंदर, और इतनी आंच दे
हिलती पांव लौट जाती है। आधी रात अब कहीं कोई बच्चा रो रहा है। आधी रात अब कहीं कोई बच्चा रो रहा है और किसी बीमार के खांसने की आवाज आ रही है। तब जबकि मैं सोच रहा था बाहर निकलकर देखना चाहिए मौसम, दवा के पर्चे को उलट कर लिख रहा हूँ, दुनिया बहुत बीमार है। अगली कविता है अनुभव। मटके में पड़ती दूध की धार की आवाज, मटके में पड़ती दूध की धार की आवाज गांव की खटाल की तमाम स्मृतियों और बचपन की भूख को जगाती है। थन के ऊष्म स्पर्श की भाषा बड़ी स्निग्ध, थन के ऊष्म स्पर्श की भाषा बड़ी स्निग्ध है। वस्तुओं के अंदर उनके रंग के तार कभी स्वाद ग्रंथियों, कभी घ्राण कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं। जब वो झंडे पर होते हैं, जब वे झंडों पर होते हैं तो अक्सर रक्त के प्यासे हो हाहाकार मचाते हैं। इतिहास हर किसी के इतिहास हर किसी के लिए कागज के पन्नों पर लिखे शब्द नहीं होता। हमारे पुरखों के न्याजे और अपमान की यातना सनसनाती गूंजती रहती है जातियों की पीढ़ियों के कानों में। शब्द लेते रहे इतिहास में अलग अलग अवतार, शब्द लेते रहे इतिहास में अलग अलग अवतार। प्रकृति के रौद्र मुक्ति में, अंतरिक्ष की क्रियाओं में किसी आर्त पुकार को सुनकर चुपचाप रह गए जो क्षण वो अधिक बोलते हैं। वीरान जंगल की रात में आत्मा एक कृतिक सा जलता हुआ दिया, कोई रिश्ता जिसका एक धागा अभी भी जुड़ा है। वेद उपनिषद और ज्ञान के हजार किस्सों पर भारी है। ये भी प्रिंटेड होगा क्या crazy? Respected Chair Mridula Garg, my fellow poets, and all of you who have come here to listen to poetry, a very good morning to all of you. मैं स्मिता सहगल पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में बसे केरल के उत्तरी भाग मलबार से हूँ। मैं पिछले 25 वर्षों से दिल्ली में रह रही हूँ। मेरा विश्वास है कि कविता और कवि This is fine? This is fine? Oh, this is fine? Yes. मेरा विश्वास है कविता और कवि समाज को बदलने में महत्वपूर्ण आते हैं। अपने लेखन के माध्यम से हम एक महत्व परिवर्तन की ऐतिहासिक तात्कालिकता का जवाब देते हैं। कवि अपनी आवाज के माध्यम से बेजुबानों की आवाज बन जाती है। This is how women become poems in Malabar. First poem which I will read
Most of us know the mythology about how Kerala came into being, how the land was reclaimed from sea by Parashurama. But then seldom we remember the beheaded mother Renuka. So this is in homage. We slept floating on leaves. This poem was featured by University of Arkansas. When it rained for 7 days and nights, sea came up, swallowing grey shoreline, unfurling waves of memory of beheaded mother. Beyond asphalt road, separating the ilk of the sea from the ilk of the land. Reclaiming those days, fish swam under guava trees in a courtyard, gossiping, tossing, tasting fire-cooked grain, sand washed pristine in the primal state of seabed, of corals, of clam secrets, we slept floating on leaves, dreaming within a dream, water flooding our lungs, limbs opening into petals, drawing into the night the shadow of fish, eclipsed blood moon, carrying earth in its womb. This land, reclaimed from the sea by unquenched rage of burning eyes, axe dripping blood, feet in long strides of 21 parikramas of Vishnu Purana. Afterward, we slept floating on leaves. The second poem, this is a return to, poetry is a return to various truths. It could be a metaphysical truth, it could be a return to your language. So, this poem, I return to my language, Malayalam. The title is Red Husk. So, you see, we always peppered our laughter with an IO. In dying jasmine flowers, strung, taunting Arabian Sea swirling beneath our feet, drawing earth. We pickled our sorrows with an IO. Tangy as palm toddy, brought down in clay pots, stored in dark cellars of memory. We salted and smoked our wounds in Ayo, in the wood planked attic, flesh stinging, flaring, throbbing, shrinking, leaving indelible buds on earth's skin. We sugared our crumbs, we sugared crumbs of our love with an Ayo, letting ants climb over walls of silence. When the rain broke into the summer nights like a thief, hot, humid taste of char on our tongue rolled in Ayur. Strange annotations of primordial rituals, tremor of sea fever, lilting songs of daily conversation. Ayur is more than a word or sound you would ever browse through in a dictionary. It is a red husk that clings to my vein. So poetry is also yes, ma'am. Poetry is also giving voice to the voiceless. So this poem is titled Kabul 2021 when it fell to Taliban. 45-year-old Najila, my childhood playmate beyond Hindu Kush walls. Flames of sun-lit summer days crouched in the cellar. We halved angles between us. Pulse of autumn strummed a tune on skies of Kabul. She brought out poems smelling of apricots. Najila, the bright-eyed one, who twisted colorful candy papers to skirt dolls, painting lips with a skin of ripe sour cherries, a laughter, tinkle of glass bangles. 45-year-old Najila, my childhood playmate with beyond Hindu Kush walls. A blizzard crossed the Khyber Pass, waiting by the gates of Kabul, sunken footprints, draining blood from the air. That was when she slammed shut windows and the doors too, and hung upside down at the ceiling like a bat or a star below an upturned world.
The sea roared in a breath. Prints and fountains spouted across the street. Where children once played marbles, heart of the moon, burnt hollow by the wildflower, across unnamed tombs. A black sea of ashes and sighs. Praise be to the merciful God. Praise be to the merciful God for locked doors and windows. She hung upside down. 45-year-old Najila, my childhood playmate beyond the bush walls. She hung upside down, Venus of the night sky, awaiting dawn. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. I'll first read few lines of a poem in my tongue so that you'll get the sound and flavor of my the soil. ಕಣ್ಣಂಚಿನ ಕದದ ಬಳಿ ಕಣ್ಣಂಚಿನ ಕದದ ಬಳಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಬಾಗಿದ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಿಸರಿಸಿ ಉಸಿರು ಬಿಗಿದು ಅಲುಗದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಆಗಸದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಮೋಡದ ಅಲೆಗಳಂತೆ ತಾಳು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಿಟುಕಿಸಬೇಕು. Few lines from a poem. It goes tears. The day when I saw myself, I sensed the pain of my sorrow. A dark cloud compressed my heart. Perhaps a star or two could be visible in the cloudy sky, but here not a speck of stardust. Dawn sound gently in the neighborhood and down the streets. My heavy breath all set to rush memories, eyes all set to flow tears. Just then, the doorbell strikes as thunder. I, I withhold tears and let the maid in. A thin line of wild smile appears. Pain pauses on its own. I bounce to house chores, unconfused, as neatly spread days in a row of weeks in calendar. Years and I enter office with a load of accumulated pain. Again, I draw a thin line of smile across my face within the office walls. Gentle taps and computer keys, hushed talks over phones, giggles over coffee cups, cabins to isolate ourselves, etc., etc. Always wait. But then there are words between my fingertips, computer keys, and screen. Words ought to play the game by time. Just do wait. Cloud of pain darkens by the evening street light. I rush home. Inhaled morning leftover pain to remind my tears to flow. A pillow light on the bed like a cracked, barren land, waiting to seep in tears. Right, my feet, tired feet, brooded a while, to rest or weep out bitter sorrow. Eyes were tired. I decided to rest. Then tears, tears, tears can always wait. Second poem, first rain. The sky is a poet with
clouds of uncontrolled emotions. Down pours the drops of letters on earth spread like an empty paper. Rhythm of lyrics flow on streets. First rain of season, when spreads the fragrance of earth, new poets bloom with eyes wide open to sky, ears filled with incessant melody, eager to hold the rainbow as ink to sprout lines on paper. Somewhere, the first rain lifts the hearts of the family one, looking up at the damaged roof and are in search of a warm corner in the house. For the first rain, and young lady stands in the corridor, clutching a baby to her waist, watches with grave eyes the muddy water on streets, washing all the words from her memories of youth. Tap, tap, tap. Raindrops thump on a rooftop, and in her heart, the pain numbs. Mad dance of Shiva has rhythm too. Hungry baby cries to suck rain from her breasts. हो गया? Yeah. Our next poet is from Kashmir, Dolly Tiku Arrwal. I hope she'll be reading in Kashmiri. मंच में मैडम मुतुल को मेरा नमन, मेरे सहपाठियों को और यहाँ सभागार में सभी बुद्धिजीवियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉली तिकू आरवल जम्मू कश्मीर से हूँ असली। मैं एक कश्मीरी गजल तरन्नुम में इजाजत हो तो बोले, तो फिर उसके बाद उसका ट्रांसलेशन भी आपको गजल है। दिल भरो दिल के समारस क्या करो लोले तब छुम लोले नारस क्या करो दिल भरो दिल के समारस क्या करो लोले तब छुम लोले नारस क्या करो इजी है सा सोनवंद है जिंदगी इजी है सा सोनवंद है जिंदगी है दर्शन अमारस क्या करो लोले तब छू लोले नारस क्या करो चार चांदनी में आने वाली गुल चांदनी फलहाने आने गुल पत्नी काले मारस क्या करो लोले तब छुम लोले नारस क्या करो दूर रोज पूर दूर रोज छारवा कर पूर सो করে থামলো कुछित बुलबुल मानो तो गुल बुलबुल सोत रुस्ती नौ बहारस करो लोल तब छुम लोल
बाल पाने काल पर मुझ पे छू, बाल पाने काल रंग पर मुझ में छू, जाल लग मुझसे खिला सारस क्या करो, लोलिता बोला आरिवल दस नारी तेरी बात, आरिवल दस नारी तेरी बात, लाल लाल सारस क्या करो, लाल ब्यूटीफुल लाल सारस क्या करो, दिल बरो दिल हमारे क्या करो, लोल तब तुम लोल करो। अब इस मेरे दिल की आर क्या करो, चल रही प्यार की उसका क्या करो, आओ तो वार, तुम कभी आओ तो तुम पे वार होगी जिंदगी, देती तुम दीदार की आरज़ू का क्या करूं, तेरे आने से मेरा आंगन महक उठता तभी, तेरे आने से मेरा आंगन महक बिन इन गुलशन मार का कहना क्या रवा है वादा अपना भूल, कहना क्या रवा है वादा अपना भूल कर, हाँ, कर चुकी हूँ जुस्तजू क्या कर, गुल को चाहकर बुलबुल आग में जलते हुए, गुल को चाह कर बोली बुलबुल में जलती हार इस गुलिस्तां का क्या करूं, तेरी हार इस गुलिस्तां का क्या करूं, श- हालपन मेरा उजड़ा दिल की आरज़ू का क्या करूं, आग दिल में जल रही है प्यार की क्या,
श्री राव साहब, आदरणीय हमारे वाइस प्रेसिडेंट मृदुला जी, शर्मा जी, आप सब तमाम अधिकारियों को प्रणाम। 50 साल का साहित्यिक सफर, 45 देशों की यात्रा, करीब 85,000 शेर कहने के बाद ये सौभाग्य मिला है कि मैं साहित्य अकादमी में पढ़ रहा हूं। माहौल इतने छोटे दायरे में इतने मृदुला आज दीदी माँ हैं, बहुत दिनों से जानते हैं, मेरी उम्र भी 75 है। ये शेर माँ के अलावा और सबको मैं प्रेषित कर रहा हूँ, क्योंकि चरणों में दूसरी बात कहूँगा आप बेटियों के लिए कि इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से, इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं, बड़ी शफकत, सदाकत, साधना, रहमत से आती हैं। कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत। आज का दिन देखिए, हमारे कुछ नौजवान दोस्त बैठे, मेरे नाम से ये शेर कहीं मत पढ़िएगा कि सदी सदी समेट कर बस एक पल बना डाला। जागती गजल है मेरी बेटी, इस सदी समेट के बस एक पल बना डाला, तेरे जुनून में तेरा बदल बना डाला, और तुझे रिझाने का बस एक ही तरीका था, तमाम जिस्म को हमने गजल बना डाला। तुझे रिझाने का बस एक ही तरीका। मुझे टाइम 8:30 को बता दीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट आपके लिए खास कर दोस्तों। मेरी माँ 101 साल की, मैंने, अब सोचने लगेगा, मैंने 10,008 शेर, नज्म, कथा, रुबाई माँ के ऊपर लिखी। मैं इतने दिन तक माताएं जीवित रहेंगी ना, अब इतना कोई लिख भी, दुनिया बड़ा सम्मान करती। कल ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरी अध्यक्षता में सम्मान था। माँ मुझे क्या समझती सुने, मुझे कमक्ल कहती है, बहुत कच्चा समझती है, मगर हर बात ही में माँ मुझे सच्चा। खुदा के फजल से नाती नवासों से भरा है घर, मगर इस उम्र में भी माँ मुझे बच्चा समझती है। मेरी हर सांस, हर धड़कन को माँ ही ने निखारा है, मेरे इल्मो हुनर को रात दिन माँ ने संवारा है। अब वो शेर रोए, मेरी माँ को चादर अलग से दी, और सारी जिंदगी मैया कहते कि कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया। मेरी हर सांस, हर धड़कन को माँ ने ही निखारा, मेरे इल्मो हुनर को रात दिन माँ ने संवारा है। कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया, कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा। दूसरा शेर, वो भी मुरारी बापू का संत शेर, कि बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। जरा सरदर्द हो जाए तो माँ झट सर्द बाती है, नसीहत लाख देती है, नए नुस्खे बताती है। 73 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूँ, अभी तक माँ मुझे सोते समय काजल। आप माताएं हैं, जो बात कह रहा हूँ आपके अलावा कोई समझ ही नहीं सकता, कि न जाने कौन सी मिट्टी से माँ का जिस्म बनता है, जो बच्चा छींक दे तो माँ को खांसी आने लगती है। मैं जब तक पेट भर कर शाम को खाना नहीं खाता, निवाला हल्क से नीचे कभी नहीं जाता। समय लोग पकड़ के घंटों सुनते हैं, मुझे समय का भान नहीं रहता। एक गजल ऐसी सुनिए आपके दिल का, और अच्छा लगे तो प्रसन्न जरूर हुई। सच एक बताने निकले, बेटे आपके लिए शेर, कि जब सच एक बताने निकले, मुंह से 10 अफसाने निकले। जब सच एक बताने निकले, फिर देखिए, हम जब दिल बहलाने, हम जब दिल बहलाने निकले, जो भी मिले सयाने निकले। हम जब दिल, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही कि मेरा आना सार्थक। जब
हम दिल बहलाने निकले, जो भी मिले बयाने निकले। दीदी माँ, जिस शेर के लिए हमने ये गजल कही है कि दिल का राज, आंखें नम हो जाएंगे आपकी, ये रुपये पैसे की गजल नहीं, ये दिल का राज छुपाने निकले, दिल में सौ तहखाने निकले। दिल का राज छुपाने निकले, दिल में सौ तहखाने निकले। अब जरा मुस्कुराइए। मतला हुस्ने मतला, दर हुस्ने मतला, दर बदर मतला एक सुन लीजिए। हम जब उन्हें मनाने निकले, वो भी हमें सताने। और शेर ये देखिए, हम जब अपनी वाली की नहीं सुनते कि खुद ही तो मुंह की खाई है, खुद ही तो पुरुष का दम्भ बड़ा होता है, खुद ही तो मुंह की खाई है तो उसको जब छुटवाने निकले। और इसका केंद्रीय कोशिश करके मैं हिंदी शब्द अधिक इस्तेमाल कर रहा हूं कि दर्द नया है, इसलिए दर्द। जख्म नया है, पीर नहीं है, हाँ कुछ तीर पुरानी। जख्म नया है, पीर नहीं है, हाँ कुछ तीर पुराने निकले। वो पल पल सोचूं, समझ न पाऊं, अपने क्यों बेगाने निकले। और वो शेर जिसके कंधे पर ये गजल यहाँ तक आई है कि जिसको हम बेघर समझे थे, जिसको हम बेघर समझे थे, उसके कई ठिकाने निकले। और साहिल किनारा, साहिल पर ही डूब गए वो जो भी हमें बचाने निकले। और दुनिया वैसे ही पागल है, सागर भी दीवाने निकले। आइए, समय मुझे ध्यान कम रहता है, एक सादा सी गजल बहुत वायरल हुई। दीदी कितने मिनट हो गए? ये मैं 1 मिनट मुझे दे दें, आपके लिए एक हिंदी की कविता। माँ, दीदी मुझ जैसे बच्चे को उन्होंने 76 साल संभाला माँ। खाली ये मेरी जिंदगी की सबसे बेशकीमती धरोहर है और ये आपके लिए मैंने लिखी है। मेरे मन में आया कि जीवन में 2 बार मैंने पुरुष से नारी बनने का प्रयास। दीदी आपके साहित्यिक आंचल पे, हे शक्तिपीठ, हे नारी देहधारी, आकांक्षी हूं कि मैं किसी संपूर्ण नारी की आध्यात्म देह में यथावत प्रवेश। एक शब्द जो 5000 साल भुगत रही। आकांक्षी हूं कि मैं किसी संपूर्ण नारी की आध्यात्म देह में यथावत प्रवेश कर जाऊं, उस कोख से सीता, पद्मिनी मर्दानी झांसी की रानी जैसी संतति पुनः पैदा कर सकूं। अरे न सूखने वाली गंगा जमुना व्यास ताप्ती, नदी बेतवा, जीवन दायिनी नदियों को निज गर्भ से निकाला। ऋषि वशिष्ठ, भारद्वाज, विश्वामित्र, श्री राम, हाँ हाँ श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शंकराचार्य, महाराणा प्रताप, अशफाक आजाद, शास्त्री अब्दुल कलाम सी होनहार कालजयी अमर संतति पुनः जन्म। नारी जनित आभामयी युगीन प्रखर मान्यताओं को पुनः परख तिरक कर सजोऊं। उनके अवसाद अपमान के हर वेदनामयी पुरुष को पुनः लावण्यमयी गरिमा दूं। जो इसका केंद्रीय है कि पराजित होते दशरथ के रथ की धुरी बन जाऊं और कोई भी प्रतिज्ञा वचन वरदान न मांगू। एक और महाबली अंजनी पुत्र की गर्भधारिणी बनूं और सूर्यदेव की अथाह उष्णता को स्वभावतः निकल जाऊं, मां को प्रसन्न कर सकूं। सतीत्व प्रभुता से अक्षुण पौरुषेय का नया अध्याय नूतन विधान रच सकूं। संयुक्त सागर गर्भ मंथन से सारे अनमोल रत्न निकालूं। अंतिम 3 लाइनें, हे आदिदेव, आराध्या, रत्नगर्भा, पीताम्बरी, क्या तुम वो सनातनी भव्य सूता लाक्षणिक नारी के बन सकोगी, अर्पित कर सकोगी, पूरा कर पाओगी मेरा अभीष्ट, या फिर मात्र मृत व्याघ्र कटिका कीर्णनाशा नायिका बनकर मेघ निकालती हो।
Good afternoon, everybody. Myself is from Bengal, West Bengal. My highest gratitude to all of you. প্রথম কবিতা জলছবি। দিন দিন বহুদিন স্মৃতিতে ঘাতক খবর। দিন দিন বহুদিন স্মৃতিকোষে জমে আছে ঘাতক খবর। হেসেলের জলছবি আরো সব আছে নেই। খুলে দেখি প্রকৃত এক মাটি দিতে পারো বর্ষগর্ভা অণু সম্ভাব্য জৈব কণা বেঁচে থাক সাদা ভরে। সম্ভাব্য জৈব কণা বেঁচে থাক কাঁচ সাদা ভরে। দ্বিতীয় কবিতা স্মার্ট ঘড়ির সময়। ঘড়ি থেকে বিন্দু বিন্দু খসে পড়ছে সালভাদর দালির সময়। আমাদের এদিকে বিড়ালের মুখশুদ্ধি হয়ে ক্ষণ গুনছে বছরের 12 মাসা। তবু অষ্টতন্ত্রের লোকজ উপাখ্যান ঘুরপথে ফিরে যাচ্ছে ঘরে। দূরে কোথাও পুলিশ পাড়ায় ভিজে গামছা। তখন গঙ্গা থেকে কাঁসাইয়ের দূরত্ব কমে যায় জলজ অবস্থানে। আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে চাঁদ। এই মুহূর্তে আমার হাতে ভিক্ষা দেখে আপনি বিস্মিত উঠুন। ব্যাধের বিষাক্ত তীরে বৃদ্ধ কৃষ্ণ আর অসংখ্য ফেলে দিচ্ছেন জলে। সেফোক্লিস ভেঙে ভেঙে বোলপুরে গোয়ালপাড়ার মাঠে এবার রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করবেন সময়ের মুখ। তেলেঙ্গানার গদার পিটসিগার হয়ে উঠতে পারুন অথবা না পারুন, সময়ের শব্দ ছন্দে একটা সুর চাপাবেন নিশ্চয়। এত কিছু উত্তর সত্য পরিসর ছেড়ে তবু আমাদের অভিভাবকেরা বলছেন এই ব্রহ্মকাল শিশুর জন্য রেখে যান বেশ কয়েক যুগের সুন্দর সকাল, অন্তত স্মার্ট ঘড়ির একটি দশক। আমার শেষ কবিতা আমার জন্মমাস কামিন্নার কোলে চড়কের দণ্ড ঘোরে গ্রাম গ্রামাঞ্চলে। পাটের ভক্তা আমার নারী যুগে ভাই এমন লোকের জন্ম কেন বা লুকায়। গাজনে কৃষির বাস গৌরী ঘরে চাষ পাড়াময় বান্ধব নিয়ে মিলনের বাস। অশ্বভূমি গ্রামান্তরে কৃষি বর্ষতি অগ্নি স্নানে বান ফোড়া বর্ষান্তি ব্ল্যাক হোলে চোখ রেখে আকাশে রকেট মাটিতে পদ্ম লেখে লোকজ সনেট। সূর্য ঠাঁই চন্দ্র ঠাঁই এমসি স্কোয়ারে মৃত্যুঞ্জয় ভনিতা লেখে নিছক পয়ারে। শস্যভূমে কৃষিজ পাঠ পরম্পরা জুড়ে তবু প্রাণ গন্ধ শোকে মাটিটুকু খুঁজে। তবু প্রাণ গন্ধ শোকে মাটি। নমস্কার, ধন্যবাদ। सभी कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आ रही है मेरी आवाज के नीचे कि सबने समय का ख्याल रखते हुए 9 मिनट से पहले ही अपनी कविता पूरी की।
मुझे आदेश दिया गया था कि कविताओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कर दूं, मगर इतनी कविताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी करना मैं समझती हूँ कि बहुत ही बदतमीजी, बद-अखलाकी होगी। वो मैं नहीं करती। सभी कविताएँ बहुत सुंदर थीं और ज़्यादातर नैराश्यपूर्ण थीं, जो कि आज की सब इस बात को लेके हम उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे। सिर्फ़ इस बात को लेकर उम्मीद की जानी चाहिए हर हाल और उम्मीद से ही हर नाउम्मीदी है। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि मज़ाक में सही, मेरे साहब ज़रा माँ को बख्श ही दिया कीजिए। ये ख़ास बात है कि जीवित रहते तो कोई माँ से पूछता नहीं तू क्या चाहती है? मरने के बाद सब बड़े खुश होते हैं कि वो मेरे लिए हलवा बनाती थी, वो मेरे लिए ये करती थी। कभी किसी ने पूछा मैं क्या करता था उसके लिए? कभी किसी ने नहीं पूछा, तो वही ठीक है जहाँ है वो वहीं मैं टिप्पणी करने की बजाय समय पर एक टिप्पणी कर रही हूँ जो उसका नाम है दान भीरू मैंने कहा दान भीरू, जैसे आज हम सब आए। क्या कहते हैं लोग, आपने बुलाया तो हर्ष हुआ, मंच से बुलवाया तो हर्ष हुआ, असल हर्ष होता है से मैं बतलाता। अभी मैंने अपार हर्ष पाया। मेरे पास एक पुराना हर्ष फ़ोन था, पड़ा-पड़ा खराब हो रहा था। ऑलिव पर इश्तहार दिया, कुल 10,000 दाम का। 2 दिन बाद एक फ़ोन आया, कहा एक फटे हाल ने नहीं तीखा नहीं, मज़लूम आवाज़ बेपर्दा कर गई। चिल्ला कर बोला, ऑनलाइन पढ़ाई वास्ते बेटे को फ़ोन चाहिए, अभी कुछ 7,000 हैं, लूँगा, बर्तन भांडे बेच दूँगा, कुछ और उधार ले लूँगा, दया करें, हर्ष अभी ना बेचें, परसों 9,000 लाऊँगा, मुझे तो दे, कृपा से। मैंने सीना ताना, कहा इंतज़ार कर लूँगा, पर कहने क्यों पूछा था अगर आवाज़ नहीं आ रही तो मैं यहीं पर नहीं नहीं आवाज आ रही है, थोड़ी स्लो थी। ठीक मैंने सीना ताना, कहा इंतज़ार कर लूँगा, पर जनी क्यों आत्मा लगी पहुँचने। अगले दिन फ़ोन लगाया, कहा चलो साथ में ही ले जाओ। वो आया, 7,000 लाया, बेबस, लाचार, कृशकाय आदमी। सुनाई दे रहा है या ऊपर? वो आया 7,000 लाया, बेबस, लाचार, कृशकाय आदमी, साथ कृशकाय किशोर बेटा। पर बेबस लाचार नहीं, कांतिपूर्ण। हर्ष देखा, छुआ, सहलाया, हुमगे, नतमस्तक हुए और मेरे सामने रखे। 100 के, 50 के, कुछ 20 के नोट। कहा गिन लीजिए, आज 9,000 हैं। मैंने कहा नहीं मैंने गिने, एक ही बात है। बेटा बोला, लेने आपको हैं, हम देने आए, गिनने आपको चाहिए। बच्चा है साहब, आप में आया, मैं गिन देता हूँ। उसने नोट गिने, जैसे आया। मैंने गुस्सा त्याग दिया, फ़ोन उसे थमाया, फिर 100 का नोट उठा, कहा बड़े बड़प्पन से, मिठाई लेते जाना, बढ़िया पढ़ाई हो, मिठाई पहले खाना, ज़रूरत नहीं है,
बेटे ने हाथ हटाया, बाप ने नोट माथे से लगाया, बेटा तना खड़ा रहा तो क्या, बेटा तना खड़ा रहा तो क्या, बाप धन्य धन्य विचारता रहा, तेज में हर्ष से भराया। ऐसे होता है असल हर्ष, सीखो, कम कीमत पर पुराना माल बेचकर, है कुछ पुराना धुराना घर में, बेच डालो तुरंत, पाओ मजलूम खरीदार, आजकल ओलेक्स पर सब मिलता है। तो ये हमारी फितरत हो गई है आज। मेरी आपसे सबसे सब युवा लोगों से विनती है कि थोड़ा मोबाइल, थोड़ा ओलेक्स, थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह वगैरह से थोड़ा निजात पाकर आदमी को आदमी की तरह समझने की कोशिश करें। तभी आपकी कविता का कोई मतलब है, तभी आपकी कविता हम जैसे रुक्ष लोगों को कुछ काव्यात्मक बना सके। धन्यवाद। इस खूबसूरत कविता गोष्ठी का धन्यवाद मैं करूं। उससे पहले हमारे बीच आशीष कुमार गिरी जी आए और मैं उनका परिचय एक बार आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। देर से आए, कुछ जरूर कहीं किसी अपरिहार्य उसमें फंस गए होंगे। आशीष कुमार गिरी जी संस्कृति मंत्रालय के पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक हैं। वे कवि, लेखक और नाटककार भी हैं और कार्यों के 4 राष्ट्रीय पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। वे गुरु दीनेंद्र चौधरी के शिष्य हैं और ऑल इंडिया रेडियो से ए ग्रेड लोक कलाकार के रूप में सम्मानित हो चुके हैं। उन्होंने लोक संस्कृति, लोक संगीत, लोक रंगमंच, बंगाल की ग्रामीण कलाओं पर 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनका एक उपन्यास तथा कहानियों एवं कविताओं के संग्रह और लय की भी एक पुस्तक प्रकाशित है। ये बड़ी अच्छी बात है कि लय की भी एक पुस्तक, लय तो हम जनरली मैं आपका इस मंच पर स्वागत करती हूँ और स्वागत करती हूँ अपने सभी का, जिन्होंने आज अपनी तरह से अपनी जुबान में, अपने रंग में, अपनी जमीन, अपनी मिट्टी, पानी, हवा, धूप की छाया हम तक पहुंचाई। हम इसी एक जगह इस गंगा हॉल में बैठकर बहुत दूर दूर की सैर कराए, वहां के दुख सुख को बहुत हद तक छू लिया और बहुत चीजें हमारे मन की कहीं किसी तहखाने कैद हो गई। कभी किसी वक्त हम जब बैठेंगे कहीं अपने में, तो शायद वो आपको अपनी तरह से बहुत भरा पूरा महसूस कराएंगी। मैं आदरणीय मृदुला गर्ग जी का बहुत आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने एक नई तमीज सिखा दी, एक नया नया तरीका दे दिया कि अक्सर हम पिछले, आप लोग तो साथ हैं मेरे, पिछले सत्रों में हम देख रहे होंगे कि हम बार बार समय को पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो हाथ से फिसल जाता है। इतनी ही बार दोहराते हैं कि समय से खत्म करिए, लेकिन लोगों के बोलने की और हमारे भी सुनने की इच्छा शायद मजबूर कर देती है। मैंने देखा कि आदरणीय गुलाब का फूल लेकर हर किसी का स्वागत करती रही कि आपने समय का सम्मान किया। ये बहुत अच्छी बात लगी। अगर आपको भी लगी हो तो बताएं कि आपको अच्छी लगी। एक बड़े व्यक्तित्व का होना शब्दों की जरूरत नहीं महसूस करता, उसका होना पता लगता है और वो पता लगा। आज के इस कविता पाठ में जब हम बैठे तो हमने बहुत कुछ सीखा, समझा, जिया, महसूस किया। आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत आभार और इसके बाद हमारा जो दूसरा सत्र होगा वो हमारे पास इतना समय बच गया है कि हम चाय पी सकते हैं। तो हम एक बार 1 कप चाय पी के और फिर वापस इसी में बैठते हैं, वापस आते हैं और दूसरे सत्र में आपसे जुड़ते हैं। आप सभी सुनने वालों का भी बहुत-बहुत आभार। सभी अलग-अलग जगहों से आए हुए बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान हैं, लेखक हैं, कवि हैं। एक ग्रुप के साथ एक फोटो भी हो जाए।